producer Kabir Lavi. Can we have some huge round of applause? Come on. Let's hear that louder. Beautiful, gorgeous actress Keerti Kulhari. Okay, at least now we need to have some huge round of applause. Come on. And definitely the man of the moment, Mr. K.K. Menon himself. Request everybody to please take seats. Many questions, but just a few thoughts about this movie. You guys have been the most integral part of this movie. How was it? What was it? Why did this happen? And everything, whatever that comes to your mind for our audience and for the media. I hand over to you. मोबाइल फोन सिर्फ एक बात करने का औजार नहीं है, एक डेमोक्रेसी के अंदर खुल के एक दूसरे से आइडियाज शेयर करने का एक यंत्र आप लोगों के पास है आज। ये यंत्र हमारे पास लगता है कि बहुत आसानी से जेब में पड़ा हुआ है, मगर इसको लाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी लड़ाइयाँ की गई होंगी, क्योंकि कभी भी किसी के पास कोई भी चीज़ जब मिल जाती है we take for granted. It is not easy to just have that available to us in today's time without a fight that has happened in the past. This film is actually a sort of our take on this kind of a fictitious idea कि अगर within an emergency ये space हम build करें तो how would that thriller play out, जिसमें एक आने वाले युग का बात करने का औजार, जब उस ज़माने में जब बात करना मना किया गया था, कैसे play out करेगा. That was the idea on which we started working on something like that, and that's what we tried to build out here. So I hope you guys enjoy the film, and when it comes out on 1st of July and you watch it, promo आपको बड़ा देखना ही है. बहुत संजीदा है यार, आप लोग खुल जाइएगा, बात करने का हक है वैसे. तो sorry about that blue little thing which came in the trailer. It was just a call drop, okay. The technology is still controlling us. मोबाइल फोन पे क्या करें. खैर, एक तो नॉर्मल जो फिल्म गोअर्स हैं उनके लिए एक बहुत मज़ेदार थ्रिलर है ये, और जो सोचने वाले होते हैं, जो आम तौर पे अपने दिमाग को घर पे नहीं रखते हैं फिल्म देखते समय, उनके लिए कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अंदर. अलग अलग स्तर पे आप उसको खोज सकते हो, चाहे वो सिस्टम का तरीका हो, चाहे वो कंट्रोल का तरीका हो. ज़्यादा नहीं कहूँगा, इशारा ही काफ़ी है. तो जी हाँ, तो इसलिए मुझे ये फिल्म बेहद पसंद है, और शायद पहली बार मैंने दस्तक दी है आप लोगों के मोबाइल पे. आज तक मैंने ऐसा किया नहीं. मैं अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि आप प्रमोशंस करते नहीं हो एंड ऑल दैट स्टफ. तो हाँ, आपने पूछा, तो मैंने रिप्लाई किसी और को दिया था कि आई डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइस एंड नॉइस. जहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती है वहाँ मैं नहीं होता हूँ. तो शोर के बीच में मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ. तो जाहिर सी बात है कि मैं ये सब कह रहा हूँ बिकॉज आई क्वाइट लाइक द प्रोजेक्ट एंड इट्स वेरी डियर टू मी. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी आपका निष्कर्ष हो इसके बारे में वो सोच समझ के दीजिएगा, वरना गोविंद जानते हो ना, The third eye. yeah, that's it. I just remember the great Albert Einstein. He stated, technology is a useful servant but a dangerous master. So I think we have kept that in the movie, and we want to project it to the youth, how they are attached to the phones and how it is controlling them right now, how it is an extension of their personality. And this is how it started, the whole sort of control with the technology. And I think it's a very fresh movie. We have tried something very different. It's a visual and audio symphony, and I hope all of you will enjoy it. And I'm very happy with my director and the entire cast. They've done a phenomenal job, and I'm really lucky to be here in this moment. And we have delivered a baby, so it will grow and I think take the leap forward. I leave all to you guys. Thank you.
Sure. Few words from Keerti as well. Any take from your side as well, please? Good evening, very good evening, and thank you so much for being here. जो फिल्म के बारे में बातें थी वो तो डायरेक्टर से बेहतर और ये सब दिग्गज लोग बोल ही चुके हैं. जहाँ तक मेरी बात है, मैं आई थिंक आई जस्ट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस जब वो आएंगे मेरे कैरेक्टर को लेके, फिल्म को लेके. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू. And here is my magic with me. My little one, Myra. Great. So now we're open for questions, media. The cast is completely yours. We can take questions one by one. Yeah. Hello. Hi, sir. Here. Over here. My question to you is, you've spoken of how the first mobile phone came in the year that still controls us. Another thing that still controls us is censorship. And we recently saw how from the famous, like the movie that's coming up, Urta Punjab, the word Punjab was taken off. And yours being a hardcore political thriller, what do you have to say about the whole censorship controversy? I don't like censorship, number one. Number two is that I don't understand the logic behind it. At the age of 18, I think you can vote, right? Yeah. So you can take the decision of electing a government at that age, which is a far greater decision than watching a film. Okay, so I don't know, I just don't know what's the logic behind this whole thing. Very well said. So it's foolish according to me, and I think it should be done away with. If you want some kind of criteria, of course you can have ratings and you can have elementary stuff which can be stopped at the exhibition stage. For example, बच्चों को नहीं देखना है तो exhibitor की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अंदर ना दे. Because of that, you should not control a film. You see, you should not ban a film or anything in that film. So for me, it makes no sense. Censorship makes no sense. Does it rhyme? Yeah. It should be self-censorship. I think we should all know what to watch and not. And since control is just an illusion, we are living in that times. Navneet will put us forward. I completely agree with this idea that, authorities always felt that if they control us, we will somehow obey them. Unfortunately, it never works. It never worked in the emergency era, and it will not work today. People are not your slaves. We live in a free country. We are adults, and we have a right to live our life the way we want to live. We elect these people to power to basically do a job, not to control us. Their control of us is purely their own illusions. That's all I have to say. Soon we'll premiere movies on Netflix, I think, if the censorship goes on like that. Yeah, KK, just adding to it, has Son Pachattar been given a certificate? Because we couldn't see it in the beginning of the promo. Usually we see. We've got a UA certificate, yes. Producer would know best. Okay, and then also adding, because you've been part of films like Pach and Black Friday with Anurag, both the films had their struggle with the board. You think over the years it hasn't really evolved the way it should have been? Let me not comment further than what I said. I think I've put it all together. कुछ चीज़ें सुधरती नहीं हमारे देश में, क्या करें? Yeah, since the movie is based on the emergency era, are you sort of anticipating any kind of trouble and any reactions from the people? Because it's a little tricky subject to tread on. देखो यार, ऐसा है ना, कुर्सी ऊंची है पर पैर जमीन पर है, तो मैं अब क्या बोलूँ तुमको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई अगर वो उनके बातों में कुछ तथ्य हैं तो बिल्कुल हम तो ऐसे नहीं कि हम सही है और आप गलत हैं, बट तथ्य ऐसा हो जो दिमाग को इंसल्ट ना हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें वेलकम है. अगर वैसा नहीं है तो हमें अपना काम करने दीजिए भैया. Right. Plus, can I add to that? We haven't kept it very political, the movie. It's a thriller genre. And we have not named anyone. It's like very subtext. So I think we've tried to not cross the line. So I think that should work for us. ऐसा कुछ हम लोगों ने जानबूझ करके सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की है. आप जानते हैं कि एक पीरियड हुआ अपने हमारी हिस्ट्री में है, जिसको द इमरजेंसी पीरियड. वो है तो है, आप उसको निकाल नहीं सकते. आप वो है, उसके अंदर हमने उस बैकड्रॉप को रख करके
एक थ्रिलर का एक थ्रिलर फिल्म बनाई है जो जो देखने में बड़ा मजा आएगा. Okay. So since this is a, I mean, it's a period film, what kind of preparation went into from your side as an actor to make sure that the authenticity remains the same? बाल लंबे की कल में बना दी. देखो यार, ये प्रश्न जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, क्योंकि हर एक्टर का अपना अपना तरीका होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. और मेरा तरीका ये है कि आई वॉज एनी विच में बचपन से लेकर होमवर्क मेरा बड़ा खराब था, तो होमवर्क तो मैं करता ही नहीं हूँ. क्योंकि आपका अगर प्रश्न होगा ना क्या होमवर्क किया आपने वगैरह वगैरह, वो नहीं है मेरे अंदर. तो उस वक्त जो चीज़ें मेरे को मैं सोचता है मैं कर लेता हूँ. और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सटर्नल मामला है ना, ये बड़ा आसान है. आपने बाल बढ़ा दिए, कलमे बढ़ा दी, बेल बॉटम पहन लिए, यू नो. बात है अंदर वाली बात की. सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं इंसान को पेश करता हूँ, मैं रोल को पेश नहीं करता. मैं अक्सर एक बात कह चुका हूँ कि आई डोंट पोर्ट्रे अ रोल, आई पोर्ट्रे अ पर्सन. ओके, सो बिकॉज रोल्स आर फाइनाइट इन नेचर. आप कह सकते हो टीचर, कॉप, लॉयर, जितने भी 25,000 होंगे रोल्स, तो मैं उसको निभाता नहीं, मैं उस इंसान को निभाता हूँ. तो अगर दो जगह पर अगर मैं पुलिस वाला हूँ और एक का नाम महेश है और एक का नाम सुरेश है, तो मैं महेश और सुरेश को निभाता हूँ, पुलिस वाले को नहीं, है ना. तो मैं कोशिश करता हूँ कि गोविंद को निभाऊँ, ना कि एक बंदा जो पीरियड का बंदा है. सो और वो बहुत निर्भर करता है मेरे इंटरेक्शंस विद द डायरेक्टर, विद द स्क्रिप्ट राइटर, विद द स्क्रिप्ट. ये सब चीज़ें जो है सबलाइन होती हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तो जितनी आपकी रिसेप्टिव पावर्स होंगी और जितने आप ढंग के कलाकार होंगे, उतना आप अच्छा पेश करोगे उसको. There are two other films being made on the same subject. So what is it that attracted you guys towards this? It was an emergency. So we did it. Our projects was something which we conceived about 2 years ago, and it was never about. We didn't know at that time whether somebody else is making a film on this topic or not. We always felt that this topic is something which is just now explored in cinema. Needlessly, it's not being done. It felt that it was a really good space to try to explore that era, and it would create a खौफ का माहौल वो इमरजेंसी के टाइम पे खुल के बाहर आ गया था. अभी किसी ने सवाल पूछा सेंसर के बारे में, तो अगर आप ये सोचिए कि अगर इसका जो डंडा है, इसका जो अथॉरिटी का जो एक है इस बात पे कि आप पिक्चर सिर्फ हमारे हिसाब से बनाइए, अगर ये आप एक्सट्रीम पे ले जाएं तो वो शायद इमरजेंसी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे. क्योंकि उस टाइम पे तो डायरेक्ट टेलीविजन न्यूज़ जो आप यहाँ कह रहे हैं, जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उस सब पे एक आदमी बैठ के सेंसर पे डिसाइड कर रहा है कि क्या ये बात हम बाकी इस कमरे से बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं. तो इट सीम लाइक अ वेरी गुड antagonist. The environment itself, it was a very dark antagonist. So we thought this would be a really interesting space to write a thriller within, which is why we chose this era. At that time, we did not know who else is making a film on emergency or which I believe is coming a little later anyway. And we did make the movie about the emergency, just we are in the emergency, so the thriller is happening, the characters are getting manipulated, with the situation. Yeah, we're not being preachy about emergency at all, and that's it, yeah. इस सवाल का मैं एक तोड़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप हर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सवाल पूछते होंगे कि एक फलाना लव स्टोरी है तो भी एक लव स्टोरी बना रहा है, एक थ्रिलर है तो वो. इसका तोड़ ये है कि जितनी कहानियाँ होती हैं ना जिंदगी में, वो सीमित है, उसका फॉर्मूला सीमित है. कहानी को पेश करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक लव स्टोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कल्लू टू कालिया फॉर्मेट, मतलब 0 टू हीरो फॉर्मेट. ये अलग अलग फॉर्मेट्स के कुछ गिने चुने 20-25 होंगे. अब बात अहमियत वाली बात यह है कि एक डायरेक्टर और एक कहानी बोलने वाला किस तरह से उस चीज़ को पेश करता है. तो चाहे वो 100 फिल्में बने इमरजेंसी के बैकड्रॉप पे या आज़ादी पे या किसी पे भी, it all depends on how it has been portrayed and told you. So this is our way of telling you the story. Somebody else might have a different way of speaking, but doesn't mean both the plots and everything is the same. Yeah.
KK sir just told about his preparations as an actor for this movie, and what preparations you did as a director for this 40 years ago काम किया यार story. I'm often accused of this, that I'm very meticulous and I'm very I take my time in trying to do any particular thing. So yeah, I mean, in terms of preparation, we wrote down the entire script. I wrote down backstories for each character, even if it was an extra. We storyboarded pretty much everything. I researched the era. I met various journalists. One person I'd like to thank in particular is Mr. Kuldeep Nair, जिन्होंने बहुत मेरे को बताया अपने उस ज़माने. He's a very famous journalist. I'm sure you as a community are very familiar with him. दिल्ली में है वो इस टाइम पे, and he's quite healthy and he's wonderful. तो उन्होंने मेरे साथ almost नहीं तो 3-4 दिन बिताए और अपने इमरजेंसी के बारे में जो जितने किस्से थे वो हमें उन्होंने बताए. दूसरा एक और जर्नलिस्ट थे सुहेल हाशमी, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया. सो आई काइंड ऑफ wanted to get a sense of कि जो हमारी रिसर्च में हमको पता लगा कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कोई कुछ बोला नहीं. अब ये बात बहुत हैरानगी की है कि कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती है. कोई कुछ बोला नहीं, कुछ तो लोग होंगे. वी नो दैट JP नारायण वाज देयर, वी नो दैट देयर वाज अ एंटायर काइंड ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री. तो उसकी खबर छपी ही नहीं, उसकी बात सामने आई नहीं. लेकिन जब लोगों से बात की तो पता लगा कि वो आवाज़ें किस तरह से हिस्ट्री से मिटा दी गई हैं. सो आई थॉट दैट bringing out something as this, bringing on this tangent in the story, कि कैसे किस आइडिया को वाइप कर दिया जाता है. तो वहाँ से जो आइडिया है सीक्रेट्स का, कॉन्स्पिरेसी का, वी स्टार्ट डेवलपिंग इट फर्दर फ्रॉम देयर. तो अगेन बहुत सारे नुआंसेस होते हैं. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. इन टर्म्स ऑफ माई वर्क विद माई एक्टर्स, मेरी मदर की पुरानी साड़ियाँ की फ़ोटो ले लेके मैं कीर्ति के साथ बैठता था कि ये उस टाइम पे इस तरह से ड्रेसअप होती थी. और छोटी छोटी बातें होती हैं, जिस तरह उस ज़माने में आईब्रोज जो थे औरतों के थोड़े से ज़्यादा थिक होते थे कंपेयर टू जो आज हम पतले पतले आईब्रोज देखते हैं. तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट वी डिस्कस्ड एंड वी वेंट विद दैट एज अ वेरी स्लाइट सॉर्ट ऑफ चेंज इन द कैरेक्टर. सो देयर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल नुआंसेस दैट वी वर्कड ऑन. And yeah, I mean, it's a long process. It'll take me another 2 years to explain to you everything that I did in the last 2 years. But thank you for that question. Yeah. KK sir, you have also worked in like masala movies also, and also have given some superb performances in meaningful cinema. masala में superb नहीं था. नहीं sir, thing is playing अलग थोड़ा सा, और the kind of cinema you do also meaningful one. So what you enjoy doing more as an actor, and what मतलब resembles you more as a personality? यार जहाँ एक्टिंग हो वहाँ मुझे सब कुछ पसंद होता है, ऐसा कुछ है नहीं. एक्चुअली अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं उसका ही उत्तर दे देता हूँ आपको, है ना. बेटर है. देखो क्या होता है ना, मेरे पास एक टैलेंट है कि अगर आप मुझे एक बक्से में डालोगे 2 महीने के लिए, मैं उसमें काम निभा के मैं निकल जाऊँगा वहाँ से और दूसरे बक्से में चले जाऊँगा. अब उस बक्से को अगर आपको पकड़ के रखना है तो आपका प्रॉब्लम है. तो चाहे वो सिंग इज ब्लिंग हो या चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो या कोई भी हो, अलग अलग बक्से हैं. वो मेरा काम है एज एन एक्टर निभाना, उसको मैं निभा लेता हूँ और फिर वहाँ से निकल लेता हूँ. तो मैं ये समझता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, कुछ नहीं है. तो अगर आपके दिमाग में भी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि कलाकार का काम ही ये होता है. आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आप अरे आपने सुगम संगीत क्यों गाया, आप क्लासिकल गाते हैं. अब यार अब छोड़ो यार. My question is that what you enjoy working on more? I enjoy acting, bhaiya. Okay. I don't mind. If you ask me reasons why I did singing sibling, okay, fine. I have such long hair, so I did it. So as simple as that. So I enjoy working. I enjoy working in different formats of films and all kinds of films. And that's the whole thing. Whether it's one day or 5-day test match or a T20, it doesn't matter. I enjoy playing. So as simple as that. अब ये मत कहना कि आपने T20 में क्यों किया, वो तो क्लासिकल नहीं है. अब यार वो रहने दो. He's a rebel basically. He's a guy who understands the system and उसने घोट के पी ली है, जानता है कि अभी एक ही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. A very sharp human being. And Govind is a guy who knows what to do in a period like this and how to get his job done. And the job getting done might be unorthodox, might be not very pleasant, but he gets it done.
and he's too sharp. He's in chess, he would be about 10 steps ahead of everybody. He's that kind of a man. Do you have any memories of the emergency? Do you have any memories of the emergency? I guess you were about 9 or 10. Do you have any Memories of the emergency. Personal memories. Emergency, I was too small then. 9 or 10 at that? All I knew was that my parents, I mean through my parents, there as a kid you can sense fear, you can sense love, you can sense happiness very easily. So as a kid, yes, I did sense that element of fear in the atmosphere around. So if it was cold, it was slightly spine chilling. If it was hot, it was like burning the skin, kind of a feeling. Yeah. Talking about the kind of roles you do, you are a brilliant actor, and the way you're answering the questions, you have a very different and brilliant approach. Do you apply that approach while choosing your roles, or these kind of unusual roles, they choose you? Madam, I am like that only. I cannot analyze my own self. It's for you to do that. So if you ask me questions about myself and as Shakespeare has once said very famously, the eye sees not itself but by reflection. Okay, so I can't see my own eye. You have to tell me. So he's the Shiv's third eye. So yeah. So questions about my persona, I have no idea. I'm like that only, as I said. But yeah, as far as choosing films are concerned, it's much like love. You don't know the reason as to why you fall in love, right? You don't measure the nose or measure the eyes, or you don't go about doing that. So something like that with every script that I read. When I read it, it sort of gets you into a bond with it, and I go in and do it. And sometimes I do it for a few 100 billion reasons, a few 100,000 reasons. Sometimes I don't do it for that kind of reason as well. So yeah. Keerti, can you please share something about your character in the film? I just now did, ma'am. Keerti. Yeah, we have 2 KKs in the house. Well, I am playing this girl called Meena in the film. She's a middle class girl of those times. तो I'm sure आज के time से काफ़ी अलग होती होगी in terms of the restrictions and the what do you call the opposite Control. the control that she lives with was much more at those times, and she has had a past which is not so pleasant, and like most of us, she's tried to run away from it and make something else of a future that she believes in, and she is desperate. She is brought out this side to her which all of us have in us, लेकिन हम उसको use तभी करते हैं जब हमें desperation होता है आज़ादी का, freedom का, सब कुछ तोड़ के छोड़ के भागने का. So you see Meena in the film in that phase of her life where she doesn't give a shit about anybody, and No bad words. she just wants to get out of this country. I mean, get out of this country, especially in those times where I don't think it was so much about what was going on in the country at that time, the fact that it was emergency and stuff, but उसकी ज़िंदगी में emergency लगी हुई थी, and she just had to get out of that. So Meena is a very nice combination of this sweet, innocent girl, which with a side to her, which is She's a rebel. the rebel, too. yeah. No, the rebel who just wants to get out, no matter what, at no matter what cost. Yeah, it was wonderful. It's I mean, it was an honor. It was a pleasure. I think Mr. Bachchan. It's just, when you meet him, when you work with him, you realize he is what he is because of, how he is. Like on the set, he is the most professional person around, the most comfortable actor to work with. He makes sure you are comfortable. He is there for you to
to give you cues, to rehearse with you no matter how many times it is. And all I can say is it's been a beautiful journey shooting for Pink with everyone and Mr. Bachchan around. And yeah, I hope something really good comes out of that. Have you ever discussed this film with him? You know, because during emergency, Shole was ruthlessly censored. So just नहीं एक्चुअली उनसे इस बात पे बात करने का मौका नहीं मिला. I'm in fact, I mean, I'm meeting him today for 3 का screening, but I don't think I'll really talk about Emergency and Sholay. No. And I wanted to ask you, what do you would you say that the representation of the armed forces is adequate in Indian cinema? What do you think about the representation of Indian forces in the in cinema today? You know, I mean, the kind of films we make, unfortunately, I would say, there is a lot of cinematic liberty that is taken, and it's disappointing most of the times, I would say. I mean, I think Lakshya was one film where they tried to stay kind of very true to what defense is like, but most of the times we mess up. Like we don't pay attention to, you know, the details of the uniforms, the ranks, how they should be, what they should look like. So yeah, not very adequately, and very happy about that. All right, so we are here to quickly take a group photograph. Let's have all the casts right here at the center. It's going to be easier for the media as well. Let's make it a little easy for them. you're working in San 75. सन 75 was quite a memorable journey. एक तो ऐसा है कि उस इरा को क्रिएट करने में थोड़ी तकलीफ होती है जो हम सब ने उठाई है, और जहाँ तक कहानी है और जिस तरह से डायरेक्टर ने उसको पेश किया, बड़ा मज़ेदार तरीके से पेश किया. थ्रिलर स्टोरी 75 के ज़माने का है, तो बैकड्रॉप में इमरजेंसी का एक फीलिंग सा है, उसके आगे एक कहानी चलती है. और जहाँ तक जो जब भी हमने कोई भी सीन्स डिवाइस किए हैं, जिस एक्चुअली क्या है ना, एक फिल्म में काम करने का मज़ा बहुत कुछ निर्भर करता है डायरेक्टर पे और यू नो जो आपके संगत में है लोग, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस फिल्म में. What is the best part about the film? बेस्ट पार्ट यही है जो मैंने कहा कि मतलब जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती. लोग अपने आप इंडिविजुअल ईगो पे एक फिल्में बनाते हैं. हम उससे परे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भैया जितना ऑथेंटिक हो मामला उतना अच्छा है.
And best thing about the Govind character? गोविंद वही बंदा है जो एक जान गया है सिस्टम, उस ज़माने के सिस्टम को, इमरजेंसी के समय वो जान गया है कि अगर इससे निकलना है तो एक अलग तरीके से इसको डील करना होगा और उस रास्ते पर निकल जाता है। तो उसको पता है कि ये जो चीज़ आने वाली है इस इमरजेंसी पीरियड में, ये जो पैकेज आने वाला है, अगर ये आ गया हाथ में चला गया तो सत्यानाश हो जाएगा। Do you think can this film create a box office successful? वो तो आपको खैर वो तो जनता के ऊपर है, वो तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ अच्छी फिल्में बना सकते हैं और अच्छे परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, बाकी जनता के ऊपर है जितनी उनकी क्षमता है दिमाग की या दिल की, उस पर निर्भर करें। Because earlier also the film like Bombay Velvet and Action Replay has done well on a box office. So I believe it will do well in the industry. Thank you. Experience working in such a play. आप आई एम श्योर जिससे भी सवाल पूछते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत मज़ा आया यार, बट मुझे एक्चुअली सच में मज़ा आया बिकॉज सबसे पहले कि ये फिल्म 70s की है तो इट वाज वेरी नाइस 2015 से सीधा 75 में ट्रांसफ़र हो जाना विद द लुक, विद द हेयर, विद मेकअप, विद द काइंड ऑफ सेट्स वी हैड, तो वो दैट इटसेल्फ वाज वेरी एक्साइटिंग। उसके अलावा जिस तरह की ये फिल्म है थोड़ी मुश्किल फिल्म है, इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर स्पेस, तो मैंने फिल्म से पहले कभी इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था एंड सो कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि इमरजेंसी क्या, कभी सुना था नहीं सुना था, बट दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली लव अबाउट फिल्म्स ऑल्सो कि आप जब अलग अलग फिल्में करते हैं, सब्जेक्ट्स पे करते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में आप समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप अ लिटिल अबाउट इमरजेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या था नहीं था, एंड फिल्म में यू नो वी हैव सम वेरी गुड एक्टर्स लाइक के एंड रवेश, टॉम ऑल्टर, एवरीवन, एंड फिल्म एज आई सेड कि थोड़ी मुश्किल थी तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही फिर होती है, करनी पड़ती है, एंड आई थिंक आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर जो सिर्फ वाइट नहीं है, उसमें ग्रे शेड्स भी हैं, तो मेरे लिए बहुत एक अलग किरदार प्ले करना, 70s का प्ले करना, ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वी वर शूटिंग इन लखनऊ फॉर अबाउट 40 days, तो लखनऊ पूरा एक्सप्लोर करना, यू नो, आई थिंक इट वाज, आई वुड रियली चेरिश द होल एक्सपीरियंस। Does the role was challenging for you? See, every role has its own challenges, as I said. But मज़ा भी मुझे तभी आता है जब कुछ challenging हो. It's very simple to just play and you know have fun. But for me, having fun is about doing these kind of challenging roles. So as I said, 70s का पूरा look था. So I went through उस वक्त के ज़माने की my mom's pictures and जो उस वक्त की जो हीरोइंस होती थी. But चूँकि मैं फिल्म में हीरोइन नहीं प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास उस वक्त की लड़की प्ले कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक जाना था. सो मुझे बहुत मज़ा आया, वो साड़ियाँ पहन के, वो टाइट सूट्स पहन के, बेल बॉटम्स पहन के, एंड एज आई सेड कि कैरेक्टर में जिस तरह के शेड्स थे, इट्स ऑलवेज नाइस टू एक्सप्लोर मोर एंड सी कि आप क्या कर सकते हैं. थैंकफुली मेरे डायरेक्टर और मेरे को एक्टर्स वाला हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की जो मेरे ख्याल से ज़रूरी होती हैं इस तरह की फिल्में करने से पहले. सो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. And how was your working with के साथ मैं अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग नहीं कर पाई. आई जस्ट हैव वन शॉट विद के वेयर वो गोली मारते हैं मुझे, ही जस्ट शूट्स. सो उसके अलावा मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला और ये मेरी एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई. सो आई एम रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इनके साथ एक प्रॉपर फिल्म करूं जहां दोनों के साथ में हो. So do you think can this film create a magic again for you to become a star? I don't know about that. मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती. मैं फिल्म करने से पहले, स्क्रिप्ट साइन ऑन करने से पहले
ये दिमाग में होता है कि अरे यार ये फिल्म मुझे स्टार बनाएगी क्या. दैट्स समथिंग. आई एम एन एक्टर. आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम एन एक्टर. और मैं एक्टर होने के नाते बस अच्छा काम करने की कोशिश कर सकती हूँ. और स्टार होना, होंगी नहीं होंगी, ये सब तो आई थिंक इट्स नॉट इन माई हैंड्स. लास्ट क्वेश्चन, फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप ट्रेलर देखिए. आज रिलीज़ हुआ है ट्रेलर और बहुत जल्द आप सबके आजकल फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया इज़ सो एक्टिव दीज डेज, तो आप लोगों के सबके पास आप मोबाइल फ़ोन्स पर देख सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर. इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ऐसा कुछ इमरजेंसी के बारे में, जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा आजकल के हमारे जनरेशन में. सो डू चेक इट आउट. समथिंग डिफरेंट. देयर आर सम नाइस परफॉर्मेंसेस. इट्स अ गुड फिल्म दैट्स मेड. And just check it out. You'll probably enjoy a different cinematic experience. So do go and watch it. The film releases on 1st July 2016. Please go and watch it if you really like the trailer. Thank you. Thank you.